Hello friends, good morning everyone. So today is the second class and welcome back to our YouTube channel Q&A Hub. And now the PDF is here, and now we will discuss about the operating systems, which is mock question paper 2. इससे पहले हम पेपर 1 वाला कुछ मॉक पेपर हम डिस्कशन कर चुके थे। सीधे हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, कोई ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे। और इसमें तो हम पहले भी बता चुके थे कि जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन होगा और ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क. So part A is almost 10 marks and part B is almost 10 mark. And if we discuss the mark distribution of part B, then that is 2.5 mark into 4. So answer with explanation. So let's start. Define virtual machine. Define virtual machine. A virtual machine is a software-based simulation of a computer system that provides the functionality of a physical computer. It allows multiple operating systems to run on the same hardware simultaneously. Example: VMware, VirtualBox, etc. This is virtual machine. A virtual machine is a software-based simulation of a computer system. Acha, means virtual machine is also a computer system which is software based simulation, and that virtual machine provides the functionality of a physical computer. It allows multiple operating systems to run on the same hardware simultaneously. Acha, it allows multiple operating systems to run on the same hardware. Example: VMware, VirtualBox, etc. Next question: write any one service of operating system. Write any one service of operating system. One important operating system service is file management. Obviously, file management, memory management. So many services are available, and you can also give so many example. Not only this file management or memory management. One important operating system service is file management, which helps in creating files, reading file, writing file, and deleting file. What is dispatcher? What is dispatcher? A dispatcher is a module that gives control of the CPU to the process selected by the scheduler. It performs context switching to user mode, and jumping to the proper program location. What is a dispatcher? A dispatcher is a module that gives control of the CPU to the process selected by the scheduler. It performs context switching to user mode, and jumping to the proper program location. This is all about dispatcher. What is name one parallel system? Name one parallel system. Symmetric multiprocessing system is an one parallel system. OPS, SMP. SMP is the one parallel system. Symmetric multiprocessing system. Define thread. A thread is the smallest unit of CPU utilization that contains program counter, registers, and stack. Multiple threads can belong to a single process. Define thread. Define thread. A thread is a smallest unit
of CPU utilization that contains program counter, registers, and stack. Multiple threads can belong to a single process. Write full form of CPU. Central Processing Unit. Obviously, yeah. Central Processing Unit. What is algorithm evaluation? What is algorithm evaluation? अच्छा algorithm रो evaluation कौन algorithm रो evaluation अच्छा algorithm evaluation means analyzing CPU scheduling algorithm in terms of criteria such as waiting time, turnaround time, throughput, and CPU utilization. अच्छा algorithm evaluation means analyzing the CPU scheduling algorithm. अच्छा आमर कौन आमर गोटे algorithm रे गोटे प्रोसेसटा कंप्लीट होगापाई बहुत सारा स्टेप रे प्रोसेस होता है गोटे प्रोसेसर वेटिंग टाइम अच्छी गोटे प्रोसेसर टर्न अराउंड टाइम अच्छी गोटे प्रोसेसर थ्रूपुट टाइम अच्छी गोटे प्रोसेसर बर्स्ट टाइम अच्छी तो यही सब जो प्रोसेसर माने बहुत सारा स्टेप अच्छी से स्टेप देकी गोटे प्रोसेसटा कंप्लीट हुए प्रथम रु स्टार्टिंग रु एंड सारी जाई थाए से जीवा प्रोसेसटा को आम कौन कही शेड्यूलिंग प्रोसेस बा आमर से शेड्यूलिंग प्रोसेसटा आम आमर कंप्यूटर साइंस रो गोटे प्रोग्रामिंग बेसिस रे जदि आम देखिबा सेटा को आम एल्गोरिदम रो गोटे माने प्रोसेस बोल के मध्य आम कहि परिबा तो सहीटा को देखला पर सही एल्गोरिदम प्रोसेसटा को आम जो एनालाइज करवा ना पूरा आमर वेटिंग टाइम रे को गोटे प्रोसेसटा केमती अच्छी बा एल्गोरिदम स्टार्टिंग केमती हिची आउ तापर तार टर्न अराउंड टाइम बड़कू तार कंडीशन कौन थिला तापर थ्रूपुट कौन है फर्स्ट टाइम कौन है एति समय प्रोसेसटा जो चली जो माने स्टेप बाय स्टेप चलू से टाइम सीपीयू केते कौन यूटिलाइज होची ऑल ओवर टोटाल जिनसटा को आम जो गोटे एनालाइज करुचे स्टार्टिंग रु एंड सारी आम सेटा को आम कहवा एल्गोरिदम रो इभालुएसन होउची मेनली आम इभालुएसन टाको आम कौन कही इभालुएसन टाको आम कही जे टोटाली उपरे इभालुएसन आम कही माने ओवरऑल आम देखा जे कौन एक्चुअली आम सेठू आम उन्नत आड़ को जाऊे बा ओवरऑल आमर कौन से हमको मिलूँ सहीटा को बेसिस ही आम इभालुएसनटा को देखी एक्चुअली तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट वन एग्जांपल ऑफ बैच सिस्टम पैरेलल प्रोसेसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैच सिस्टम डिफाइन मॉनिटर ए मॉनिटर इज ए हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन construct that allows safe access of shared resources. It combines mutual exclusion and condition variable. Define monitor. A monitor is a high-level synchronization construct that allows safe access of shared resources. It combines mutual exclusion and condition variables. What is synchronization hardware? What is synchronization hardware? Synchronization hardware refers to low-level machine instruction like test and set, compare and swap used to solve critical section problems. What is synchronization hardware? Synchronization hardware refers to low-level machine instruction. अच्छा, low-level machine instruction like test and set, compare and swap used to solve the critical section problem. अच्छा तो नेक्स्ट आम पार्ट बी डिस्कसन करवा where the question is all about 4 question and each question contain 2.5 marks. So let's start. First question, differentiate between user mode and kernel mode. Differentiate between user mode and kernel mode. अच्छा user mode
Mm, at first, the CPU operates in two modes for protection and security. The CPU operates in two modes for protection and security: user mode and kernel mode. User mode. User mode executes user application. अच्छा एवं हाँ user mode executes user application. A kernel mode execute OS code. अच्छा user mode restricted access to hardware. Kernel mode full access to hardware. User mode example running MS Word. Kernel mode handling interrupts. अच्छा then difference ensure that user program cannot harm the system or interfere with other program. अच्छा यूजर मोड और कर्नेल मोड रो डिफरेंशिएशन ताले कौन कौन हला यूजर मोड एग्जीक्यूट्स यूजर एप्लीकेशन कर्नेल मोड एग्जीक्यूट्स ओएस कोड एप्लीकेशन ओएस कोड यूजर मोड restrict access to hardware कर्नेल मोड full access to hardware यूजर मोड रो एग्जांपल हला रनिंग एमएस वर्ड कर्नेल मोड रो एग्जांपल हला हैंडलिंग इंटरप्ट्स second question now come to the second question explain the role of PCB process control block explain the role of PCB in process management अच्छा explain the role of PCB in process management the process management sorry in process management the role of PCB process control block is a data structure maintained by the operating system to store information about a process. अच्छा कौन कौन कहला the process control block is a data structure. अच्छा PCB टा गोटे डाटा स्ट्रक्चर टा यार PCB process control block टा एटा गोटे डाटा स्ट्रक्चर टा and maintained by the operating system obviously भाई कंप्यूटर रे जहाँ भी जिन अच्छे सबू का तो मेंटेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस होता है आमर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज करे पीसीबी को राजार घोड़ा जे ताकू मैनेज करनी यार हाँ पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है एवं पीसीबी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक टा गोटे डाटा स्ट्रक्चर टा एंड व्हिच इज मेंटेन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम कौन पे से मेंटेन करे पीसीबी रो काम कौन जे ताकू मेंटेनेंस दरकार होची पीसीबी रो काम होची टू स्टोर इनफॉरमेशन अबाउट ए प्रोसेस हमर जो प्रोसेस अछि विभिन्न सब काम जते बळे हमर करूजे से सब हमर विभिन्न प्रोसेस देखि जाउची सेही सब जो प्रोसेस जो एल्गोरिथम जो सब अछि ताकू मैनेज करबा पई एवं तार इनफॉरमेशन को स्टोर करबा पई हमर पीसीबी दरकार process control block दरकार process control block is a data structure maintained by the operating system to store information about a process contents PID process ID state program counter CPU registers memory information accounting information input out information role कौन acts as identity card of a process during context switching current process control block is saved and next process control block loaded allowing efficient process management describe round robin scheduling with a suitable example describe round robin scheduling with a suitable example अच्छा so round robin RR Rolls Royce Rosnaranjam round robin is a primitive scheduling algorithm for time sharing system each process gets a fixed time quantum if unfinished moved to end queue example is here P1 P2 P3 then quantum number is 4
quantum time is 4. Gantt chart is P1 0 to 4 को गला हाँ आउ केते पड़ला 2 पड़ला 2 टाइम पड़ला देन P2 आसला P2 से 4 रु 8 सारी तापर P3 8 रु 12 तापर P1 रो दुईटा पड़ी थिला तो ये 12 सर जाइए माने 12 रु स्टार्ट हला दुईटा पड़ी थिला माने 14 को गला तापर P2 14 रु स्टार्ट हला P2 रो तो बर्स्ट टाइम थिला 8 P2 रो बर्स्ट टाइम 8 थिला एठी से ऑलरेडी 4 जाई सारछिन आ 4 अछि माने 14 रो ले 18 गला P3 रो बर्स्ट टाइम थिला 7 एठी प्रथम 4 जाइछिन आ 3 अछि तो P3 3 गला माने 8 रे 3 मिसले 21 से बडा P2 तो P तबरा थर P2 हरि गला P2 थिला नि कि P2 टा हरि 21 रु 22 को गला एवरेज वेटिंग टाइम जार बाहर करबो तब एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी बाहर करा जीवो एवरेज फेयर डिसएडवांटेज एडवांटेजेस होची फेयर डिसएडवांटेजेस होची ओवरहेड इफ क्वांटम टू स्मॉल एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग सीमाफोर एग्जाम these are the main important question round robin scheduling how amaro producer consumer problem producer consumer problem producer generates items consumer consumes buffer full or empty causes race condition semaphores used mutex 1 empty and full 0 producer wait empty wait add item signal mutex signal full consumer full remove item signal mutex signal empty ensures proper synchronization and avoids race condition. Thanks for watching this video and I will provide you producer consumer theory with good explanation in one video and in another video I will provide you a good explanation is all about round robin scheduling and also I will provide in another video what is PCB and in another video I will provide what is algorithm. So do subscribe to our YouTube channel and thank you for watching. Thank you.